पुष्पा, पुष्पराज, पुष्प नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? वाइल्ड। अरे रुको रुको रुको, हमेशा मेरे बच्चे से भी डायलॉग में घुसा हुआ रहता है फिल्मों की दुनिया में। अब देखो बच्चों, पुष्पा तो बन गया वाइल्ड फायर, ये तुमको पता है, और तुमको ये भी पता चल गया है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पर मेरे कुछ बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को अभी तक डाउट है कि फ्लावर क्या है, फ्लावर के पार्ट्स क्या है और ये किस काम में आते हैं। क्योंकि हम अक्सर यही काम करते हैं और या फिर यहीं पे हम लोग गलत कर देता है कि अगर हम उसका फंक्शन ना जाने तो उसे हम और किसी काम में लगा देते हैं। जैसे कि मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे ने क्या करते हैं कि इस फ्लावर को लेकर के किसी को दे देते हैं और बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं करना है। इसके बाद मैं ये आशा करूँगा, क्योंकि मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि ये फ्लावर क्या है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। जैसे कि हम लोग का भी एक कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं जीने के लिए, वैसे प्लांट को भी रहते हैं। एंड दिस इम्पोर्टेंट ऑर्गन नॉट ओनली इट हेल्प्स द प्लांट टू गेट सर्वाइव बट ऑल्सो इट हेल्प्स इट टू रिप्रोड्यूस इट यंग वंस। नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए फूलों के साथ ज़्यादा छेड़खानी करने का नहीं है। सो नाउ वी विल नो what is this flower, how many holes are there, and how it is used for the reproduction in plants. Now you can see here, this part is the filament and above it is the anther, and this anther and filaments both together known as the stamen, or we can say this is the male reproductive organ, because we already know that in sexual reproduction we need two individuals or two parents. One is male, one is female, as we have seen already in the animal reproduction. So in plants, this anther and this filament consist together to form a stamen, which is the male part. And so in the same way, the female part consists of the stigma, which is this part, and this is the style, and this is the ovary. This location is the ovary, and these three consist of to form the female reproductive organ, or commonly known as the pistil, and here this is known as the stamen. So now when the anther, this anther part is having some pollen grains, when these pollen grains falls on the stigma, then the compatibility checking is there. Now it has to check whether this pollen grain is fit for me or not, whether it is good for the next generations or not. Once it passes here, it slowly moves through this style and it reaches to the ovary where the ovules are present. Now in this ovary, it contains the ovules. When these pollen grains and ovules mix together, then only the reproduction starts. So in this class, we are going to deal with this much, and to each of the parts we will discuss it one by one in the later part. So the next part is going to come, so stay tuned and stay focused. All the best.